फ्रेंड्स, एसएससी एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज 600 से 700 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। 601 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बिटर क्वेरल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूड यानी शत्रुता। चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, फिकल यानी चंचल, एज अपोज्ड टू रियलिटी इमेज्ड नॉट रियल। फिक्टिटियस यानी काल्पनिक या काल्पनिक। Someone that is imaged but does not exist. फिगमेंट यानी मनगढ़ंत। Someone killing of one's town child, filicide यानी पुत्र हत्या। A strong interest in something or someone. फिक्सेशन यानी किसी से गहरा लगाव। A person who attracts attention with a flashy style, flamboyant यानी भड़कीला। A group of ships sailing together, fleet यानी जहाजों का बेड़ा, which can easily be carved without breaking. Flexible यानी लचीला। A quick sudden movement, flick यानी झटका। Shine with a bright but brief or irregular light. Flicker यानी झिलमिलाना। Unwelcome aspect of a situation. Flip side यानी अवांछित पहलू। A group of birds of one kind. Flock यानी झुंड। Planets and vegetation of a particular region. Flora यानी वनस्पति। A person who sells and arrange cut flower. Florist यानी फूल वाला। To struggle helplessly. Flounder यानी घबरा जाना। Accidental good fortune. Fluke यानी अकस्मात सफलता। Continuous movement and change. Flux यानी प्रवाह। Go or come after a person or think, proceeding ahead. Flow यानी पीछा करना। Chief of a group of workmen. Foreman यानी अधिकर्मी। Ability to see that might happen in future. Foresight यानी दूरदर्शिता। Be deprived of property or a right or privilege as a penalty for wrongdoing. Forfeited यानी जब्त करना। Move ahead or forward steadily and gradually. For यानी लगातार आगे बढ़ना। Classification of document etc. फर्जी यानी जालसाजी। Direct and outspoken. Forthright यानी स्पष्टवादी। A period of 2 weeks. Fortnight यानी 2 सप्ताह। Something that is to your advantage but happened by chance. Fortuitous यानी भाग्यशाली। The hard remains of a prehistoric animal or planet that are found inside a rock. Fossil यानी जीवावशेष। An abandoned child of unknown parent too is found by somebody. Foundling यानी परित्यक्त शिशु। An entrance hall in a building used by the public, especially a hotel or theater. Foyer यानी बरामदा। Something which gets broken easily. Fragile यानी भंगुर। Weakness and poor health. Frailty यानी कमजोरी। Constitutional
राइट टू कास्ट वोट, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज यानी मताधिकार, एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड यानी भातृहत्या, एन एक्ट ऑफ डिसीविंग somebody in order to make money, fraud, fraud यानी धोखा, किजिंग और affected by anxiety or stress, fraud, fraud, fraud यानी व्याकुल, the feeling of being upset or annoyed as a result of being unable to change or achieve something. Frustration, frustration यानी निराशा, one who runs away from justice or the law. Frugative, frugative यानी भगोड़ा, doing something awkwardly, awkwardly or in a clumsy manner. Fumbling, fumbling यानी गड़बड़ करना, one who walks on ropes. फ्यूमेम्बलिस्ट, फ्यूमेम्बलिस्ट यानी रस्सी पर चलने वाला नट. Simple, fast spreading plant without flower or leaves which can often cause disease. Fungus, fungus यानी फफूंद, hair of animals which is soft and used for making wool. फुर, फुर यानी रुआ. The main body of an aircraft. फ्यूजलैग, फ्यूजलैग यानी हवाई जहाज का ढांचा. अ ब्रेव, नोबल माइंडेड और चिवलरस मैन. ग्लैंड, ग्लैंड यानी वीर. केजिंग, अनॉयंस और रेसेंटमेंट. गैलिंग, गैलिंग यानी कष्टकार. टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे. गार्बडेड, गार्बडेड, गार्बडेड यानी अस्पष्ट. Talks a lot to explain something very trivial. Garrulous, garrulous यानी बातूनी. The art and practice of cooking and eating good food. Gastronomy, gastronomy यानी पाक कला. Chief और commander of army. General, general यानी सेनाध्यक्ष. Science of heredity, genetics, genetics यानी अनुवांशिक. The murder of a whole race or a group of people. Genocide, genocide यानी जाति संहार. Really coming from its stated, advertised or reputed source. Genuine, genuine यानी असली. A person who studies the earth and the materials of which it is made. Geologist, geologist यानी भूवैज्ञानिक. The study of earth including the origin and history, history of the rocks and soil of which the earth is made. Geology, geology यानी भूगर्भशास्त्र. The branch of medical science which deals with the problem of the old. Geriatrics, geriatrics यानी वृद्धावस्था चिकित्सा शास्त्र. The state government by old people. Gerontocracy, gerontocracy यानी वृद्ध शासन. Study of the various aspect of aging. Gerontology, gerontology यानी वृद्धावस्था. A movement of part of the body to express an idea or feeling. Gesture, gesture यानी इशारा. In a threatening manner. घास्टी, घास्टली यानी खौफनाक रूप से. A part of the city, especially of slum area. Gastro, gastro यानी बस्ती. Inflammation of gums. Gigantives, gigantivities यानी मसूड़े की सूजन. An extremely large mass of ice which moves very slowly, often down a mountain valley. Glacier, glacier यानी हिम नदी. A person who repairs broken window glasses. Glazier, glazier यानी कांच का काम करने वाला. A list of technical or special words, especially those in a particular text
explaining their meanings. Glossary याने शब्दकोश. Look at someone in a angry or threatening way. Gloomer याने घूर कर देखना. One who eats too much. Glutton याने खाओ या पेटू. A bite like a rat. Gno याने उतरना. Next, who loves good food and knows a lot about it, or connoisseur of food. गवर्नमेंट यानी खाद्य पारखी. राइटिंग और ड्राइंग. स्क्रिबल स्क्रेच्ड और स्पेयर्ड illicitly on a wall or other surface in a public place. ग्राफिटी यानी दीवार चित्रण. A piece of a living tissue or plant that is transplanted surgically. ग्लेफ्ट यानी रिश्वत. A building where grain is stored. ग्रैनरी यानी धान्यागार. Costing nothing. ग्रेटिस यानी निशुल्क. A room or building for a preservation of plants. ग्रीन हाउस यानी पौधाघर. An animal that lives in groups or tending to associate with other of one's kind. ग्रेगेरियस यानी झुंड में रहने वाला. The sound a bear makes. ग्रुवल यानी भालू के गुर्राने की आवाज. The sound made by a camel. ग्रुंट यानी ऊंट की गुर्राहट की आवाज. One who is easily deceived. गुलीबल यानी आसानी से धोखा खाने वाला. Eat or drink food quickly and in large amount. ग्लुप यानी निकल जाना. A strong blast of wind. घुस्ट यानी हवा का झोंका. A room filled with equipment for games and physical exercise. जिम्नेशियम यानी व्यायामशाला. One who treats female elements. गायनोकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ. साइंस ऑफ ब्लड. हेमेटोलॉजी यानी रुधिर विज्ञान. a perception without objective reality. Hallucination यानी माया. A drug which makes one see things that are not really there. Hallucinogen यानी विभ्रामक दवा. A very small village. Hamlet यानी छोटा गांव. Come in the way of. hamper यानी रोकना. Activities such as sewing and making cloth that use skill with your hands and artistic ability to make things. Handicraft यानी हस्तशिल्प. A building in which aircraft are housed. Hangar यानी विमानशाला. A lengthy and aggressive speech addressed to a large assembly. harangue यानी प्रभावशाली भाषण. Trouble and annoy continually. harass यानी परेशान करना. Somebody that foretells the coming of something. harbinger यानी संदेशवाहक. A place of shelter for ships. harbor यानी बंदरगाह. A spear used for hunting large fish. harpoon यानी मत्स्य भाला. acutely distressing. harrowing यानी खौफनाक. Next, irritating
इनकॉन्वीनियंस, हैसल यानी परेशान करना, नंबर ऑफ फिशेस गेटिंग कॉट, हेल यानी जाल में फंसी हुई मछलियों की संख्या, ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनल, हियरस यानी शवयान, इन एन एंथुसियास्टिक वे, हेयरटिली हेयरटिली यानी उत्साह से, मेकिंग वन फील वेरी सैड, हार्ट यानी दुखी करने वाला, इंटरप्ट और अ पब्लिक स्पीकर, इंटरप्ट विथ डिरिसिव और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज, हैकल यानी प्रश्नों से तंग करना।